तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक का। तो बिहार पुलिस जो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट आया था वो 14 अगस्त को आया था। एप्लीकेशन प्रोसेस अगस्त से शुरू हो गए थे और एग्ज़ाम डेट सून था। तो इसको कुछ क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि क्या है, और क्वेश्चन पेपर सैंपल कुछ देखेंगे। सैंपल एस आई सर्जेंट बिहार, ओके। तो ये हम चेक करेंगे, इसमें कुछ देखते हैं और उसको, ये कब के हैं, कुछ प्रीवियस टेस्ट बुक हैं तो उसको भी हम करेंगे। पीडीएफ तो नहीं, टेक्स्ट बुक डॉट कॉम हम देखते हैं कि क्या है ये। पीटी और मेंस का है, तो चूंकि ये पीटी का है तो हमें चुनना होगा कौन सा ईयर का है। तो चलिए हम 2018 का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर मैं ये नंबर पूछ रहा है, यूज वन क्लिक साइन अप, मोबाइल नंबर। तो हमें, चलो ये हटाओ, मैं हमें बस सैंपल कुछ चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, कुछ अगर मिल जाए मॉक बैंक डॉट कॉम से। द सिलेक्टेड प्रोसेस हैज 4 स्टेजेस। तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। प्रिलिमिनरी, जिसको हम प्री एग्जाम कहते हैं, मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा, फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम पैटर्न में ये हैं क्वेश्चन जो हैं जनरल हिंदी के, वो 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। इसमें जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, सिविक्स और इंडियन आता है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 क्वेश्चन से टोटल 400 मार्क्स के ये होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC/ST के लिए 32%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 34, बैकवर्ड क्लास 36 और जनरल कैटेगरी के लिए 40%। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। Hindi paper is a qualifying nature and candidates need to score 30% marks to pass this paper. हिंदी के पेपर में at least 30% marks लाना ही होगा and there's a negative marking of 0.2 marks for every wrong question. तो यहाँ पे negative marking है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके हम नहीं आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो negative marking होती है। और चलिए इसके syllabus को जान लें। For general knowledge and current events section, candidates will have to study mentioned topics properly. National and international यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, स्पोर्ट्स यानी किसको क्या अवार्ड मिले हैं या कौन सा खेल किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, renowned personalities and common names, full form of abbreviations जैसे ONGC, डिस्कवरीज यानी आविष्कार और आविष्कारक, डिजीज एंड न्यूट्रिशन जैसे ओमिक्रॉन हुआ है, ये रिसेंट है, इस पर भी देखना है। अवार्ड एंड ऑथर्स, कल्चर एंड रिलीजन यानी संस्कृति और धर्म, इसके बारे में होंगे। नेक्स्ट हमारा हेरिटेज एंड आर्ट्स, ये भी कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। कंट्रीज एंड करेंसीज, तो इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिफेंस एंड नेबर्स, तो यहाँ भी देखना पड़ेगा। मेन एग्ज़ाम पहले प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस आएगा। मेंस में देखिए आप यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जो प्रोसेस है वो प्री होगा फिर मेन होगा, जैसे प्री था, तो ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आप चुने जाएंगे। और मेंस का भी सिलेबस फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद ही होगा, उसमें टाइम है, तो मेंस का फ़िलहाल हम स्किप करते हैं। हिस्ट्री सिलेबस है, ये डिटेल में होगा, तो उसको हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि क्या क्या है। चलो ये वाला है, ट्रेनिंग का है, तो ये सारा चीज़ है। चलो यहाँ पे हम PDF डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं। हमारे पास डाउनलोड हो गया है, वेरी गुड। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस थे और ये देखिए काफ़ी लंबी लिस्ट है 70 पेज का, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे
वो ज़्यादा होंगे। इससे राइटिंग है, ठीक है। ये जनरल इंग्लिश की क्वेश्चंस है। गिव कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, इसको भी जानना होगा। टेंडर प्रेज यूज आर्टिकल ऑफ, बेसिक इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं देख पा रहा हूँ अभी। और इसके बाद इसको यहाँ से करते हैं ड्रैग। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जनरल मैथमेटिक्स। Yes, an amount of 35,000 has been given to A and B in a ratio of 5:2, but how much must take the amount of the student ratio to, कुछ ये हैं, फिर लेबर से, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ हैं क्वेश्चंस। जनरल इंग्लिश एंड ग्रामर भी है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसके बारे में पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है पूरा सारे क्वेश्चंस का एक सम अप करके दिया हुआ है, और जितने भी ग्रुप होते हैं उनको मिला करके दिया गया है। जैसे एक्सपेंड द एब्रिविएशंस हैं, SBF यानी स्टाफ बेनिफिट फंड, MBF यानी म्यूचुअल बेनिफिट फंड, CCO चीफ क्लेम्स ऑफिसर। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, ये अच्छी बात है। CW चीफ वर्कशॉप इंजीनियर, ये भी एब्रिविएशन में याद करना, क्योंकि हमने सिलेबस में देखा था कि एब्रिविएशंस भी थे। ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। फिर द ब्लैंक्स, लिपाक्षी इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, किस डिस्ट्रिक्ट में लिपाक्षी है ये मुझे भी नहीं पता, तो देखना पड़ेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इज एट BHEL इज एट हैदराबाद, ये मुझे पता है। बाकी देखते हैं, और भी स्टेट में हो सकते हैं, पर हैदराबाद में है ये मुझे पक्का पता है। नागार्जुना डैम इज इन द स्टेट ऑफ, तो किस स्टेट में नागार्जुना डैम है, इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। कोणार्क एक्सप्रेस रन बिटवीन मुंबई, तो यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड है। और ओस्मान सागर इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है उसको देखेंगे। कोवलम बीच इज इन तमिलनाडु, कोवलम बहुत फेमस है तमिलनाडु में। RCF इज सिचुएटेड, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। टाइप 3 लीव एडवांस अलाउंसेस, DA स्टैंड्स फॉर, DA मतलब क्या होता है, डेली अलाउंसेस। बेसिकली जो भी सैलरी हैं या फिर जॉब होल्डर हैं तो उनको DA बनता है, डेली अलाउंसेस। CCA, HRA, हाउस रेंटल अलाउंसेस, TA। तो ये सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब पेमेंट मिलती है तो इनका इस्तेमाल पे स्लिप में किया जाता है। VI लेबर ऑर्गेनाइजेशन NFRI स्टैंड्स फॉर, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें डिटेल में समझना होगा। और एटलीस्ट इन क्वेश्चंस का अगर हमने आंसर एक बार प्रैक्टिस कर लिया, अगर मैथ्स के कैलकुलेशन हमने कर लिए, तो थोड़ा बहुत आप ऑलमोस्ट 20% तक स्कोर आराम से कर पाओगे। करेक्ट द स्पेलिंग, तो प्रेज PRAISE होता है प्रेज, यानी प्रशंसा करना। मैट्रिक्स RIX होता है। सिंपोजियम टेम्पोररी होता है। इम्पोर्टेंट होता है। ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक हैं, उनको ठीक करना होगा। आई थिंक ये सारे सेट को schemes of distress and sickness of staff and children under SPF, explain briefly the scheme of recreation and museum staff in the, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, बट आई डोंट थिंक ये SI के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा जूनियर क्लर्क टॉप, सो नॉट प्रीटी श्योर कि ये उसी का है। बिहार पुलिस दरोगा से BPSC बिहार सार्जेंट एग्जाम और क्वेश्चन पेपर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ये हमारा रेलिवेंट होगा। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बुलेटिन जनरल साइंस टेक्नोलॉजी पेपर, शायद ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बिहार असंतृप्त वशा, इसको डिफाइन करना। आई थिंक ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, इसलिए डिफाइन करना है, वरना ये 200 के क्वेश्चंस टोटल। तो मेंस का जो पेपर है वो इस टाइप से होगा, दैट इज फॉर श्योर। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये मेंस का पेपर है, तो इससे भी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम प्रिलिमिनरी यानी प्राथमिक जो प्रश्न पत्र है उसको देख रहे हैं। ये बिहार दरोगा सार्जेंट क्वेश्चंस प्रीलिम्स मेंस दोनों के हैं, मॉडल क्वेश्चन है, तो देखते हैं शायद कुछ क्वेश्चंस इससे भी मैच कर जाए। तो टेस्ट बुकलेट जनरल नॉलेज, आई थिंक CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2015 का क्वेश्चन पेपर है। डू नॉट ओपन द टेस्ट बुकलेट, पूरा बुकलेट ही यहाँ पे डाल दिया गया, बट ये 2015 का काफ़ी पुराना है, सो चेंजेस हो सकते हैं। जेनेटिक
स्क्रीनिंग क्या है उसके बारे में जानना भी चाहता। फॉलोइंग इज द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर। तो ये कौन थे इसके बारे में पता करना होगा। कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स: छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। And then we have some questions. Which among the states given below has the largest and the smallest respectively in the terms of geographical area? तो कौन सा उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सारे जो स्टेट हैं मोस्टली साउथ के हैं और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश में आता है। अनुवांशिक परीक्षण जैविक स्क्रीनिंग क्या है उसको भी देखना है। तो क्वेश्चंस ये सही है वो 2015 का है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोबाल्ट संबंधित है किससे? कोबाल्ट वृद्धि उनसे विटामिन B12 से। कोबाल्ट तो अगर हम यहाँ देखेंगे और सर्च करेंगे, कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विथ, कोबाल्ट इज अ हार्ड ग्रे मेटल एलिमेंट, इट इट्स पार्ट ऑफ विटामिन B12। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर मिल गया है, तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट विटामिन B12 से। ठीक है, तो ये हो सकता है। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, अवशोषण का इंग्लिश मुझे नहीं पता फिलहाल, तो स्किप करते हैं, देखते हैं। ओके, सो दिस इज द इंग्लिश क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सो। अच्छा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रश्न पत्र दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर हैं। तो ये इसका क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। पेनिसिलिन इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल। पेनिसिलिन इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल। देखते हैं क्या आंसर आता है। द मेम्ब्रेन ऑब्स्ट्रक्ट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। देखते हैं, एंटीबायोटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और सेल वॉल, तो यहाँ पे सेल वॉल होगा क्लियरली, सेल वॉल। तो यहाँ पे आंसर सेल वॉल होगा, यानी ऑप्शन में ए। अब हम एक काम करते हैं, ओपन बुक, ओपन बोर्ड खोल लेते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मार्किंग करने में। और मैं डेली 4 बजे के बाद शाम को कुछ नोट्स करके देखना चाहूँगा। तो सो डेस्कटॉप में जाएंगे, न्यू नो, आई डोंट नीड एनी अपडेट, आई जस्ट नीड दिस नो। सो डेस्कटॉप, इसको क्या करना होगा, जस्ट कैंसिल इट आउट एंड वी जस्ट वांट to, every time it is asking for so desktop. Yes, finally, so we have this. You can choose a pen to, ये cell wall होगा। Which of the following state capitals of the Northeast India are connected by Indian Railway? So Northeast India Railway, we would see that. Northeast India. So how do we go? I need to skip it. Skip this and then you cannot show the whole thing, right? So basically, how do we? Okay, let's go by words and not by marking. I'll later see how to use it and then update. So most antibiotics target bacteria parasite interfering with various factors of growth of memory such as synthesis of wall cell. यही होगा आंसर इसका।
So we will cover up the English questions. हिंदी के थोड़े words मुझे बिल्कुल नहीं आते सही से. So red phosphorus is used in the manufacturing of safety machine. This is due to the fact that red phosphorus is used in manufacturing of safety matches. This is due to the fact that red phosphorus is red phosphorus is used in safety matches due to the fact because it's so phosphorescence and cannot be converted to white phosphorus on heating. So that will be the answer. It shows phosphorescence. This one. This is also one of the answer. So A and C both. Okay, no problem. We have another question. We'll cover up the English questions mostly, and then which of the following is not gaseous air pollutant? So we need to find. Even I don't know the answer. Google will help me out. Not a gaseous air pollutant. Leave this off. I want a concrete question. 7 we have 28. Which of the following statement is not correct? So again, it's a tricky question. We need to know all the options before we can give our final judgment. So leaving the 28 number, let's move on to 29. Which of the following is the pattern of circular around a low pressure area in northern hemisphere? This is related to geography. Not very sure, so let me skip it. Which of the following is not true? Again, this is something tricky, so let's ignore. Let's jump on to page number 31. Which one of the following statement is about the atmosphere is correct? Again, tricky. So the atomic theory of matter was first proposed by atomic theory of matter. The atomic theory of matter was first proposed by John Dalton. So John Dalton proposed the first atomic theory of matter. So the answer will be John Dalton. This one. Okay. Which one among the following statement about diatrophism is correct? So most of the questions are tricky. They are something that you need to know all the options before you can reach to the final conclusion. X-rays are again see this question. Question 35. Which one of the following minerals contains mostly silica? So need to understand what does mica contain, what does quartz, olivine, and pyroxene. So that's a very easy one. Again, the focal length of a lens of a normal human eye is focal length of a normal human eye. The focal length of a normal human eye is about 2 centimeter or 20 mm. 2 centimeter or 20 mm. So 2 centimeter or 20 mm. So it's 2 centimeter, 2.5 centimeter, no 2.5, no 1 and 25 centimeter. Again, that's huge. It could be 20 millimeter or 2 centimeter. So now the options, what would I go with? Leave this apart. Which are the following options? Which are the following elements? Newton's law of motion do not hold good for objects at rest. That's the first option. Which one of the following physical quantities is the same for molecules of all gases at a given temperature? Can we copy this entire statement? Let me see. No, we cannot. So unfortunate. Okay, I don't need to zoom in or zoom out. Let me zoom out first so that we get a more visibility of the questions. We'll cover up more questions. We'll fall asleep at 7:44 p.m. already. Most of the questions that I see are tricky one. They are given in a statement wise. No problem. We'll find some answer. These questions are in Hindi. So if you're not understanding any English word, you can refer to the Hindi questions. So that's a good thing.
Which one of the following is not a part of the service sector in India? This is service, hotel and restaurant is service. Construction, I would say, is not a service. It's a business kind of model where we build, we invest, and then we pay it in some amount. So transport is again service. We are offering a service to the passengers that are traveling to their home or their office or anywhere that they're living in. So the construction would be the right answer. What else? Under flexible exchange rate system, the exchange rate is determined. Even I don't know this. After the general elections, the pro tem speaker is pro tem. Pro tem speaker is, I don't know. After the general election, the pro tem speaker is. After the general election, the pro tem is selected by. Senior Lok Sabha members. The list of senior Lok Sabha members. The senior most member of the Lok Sabha. So this will be the right answer. Okay. We'll jump on to the next page and try to go over a few more questions and we'll fall asleep. It's 7:46 now. Okay. I don't know the answer to these questions, so let me skip. Which of the following is not central tenets of the Constitution of India? No idea. Which of the following facts are related to Myanmar? So I need to know everything almost about Myanmar before answering this question. That's something tricky and should be considered very precisely to answer such questions. That's where people are stuck if they don't know and just have mugged up. So it's important to read about any particular thing in detail to understand in and out of any particular context. The Sur Sagar is a medical treatment of music. The Sur Sagar is, let me find the answer through Google. The Sur Sagar is, no, the Sur Sagar is, Sur Sagar is, the Sur Sagar is a poetic composition by Sur Das. The Sur Sagar is a poetic work of Sur Das. So this will be the answer. Sur Sagar is a poetic. Okay, next question. Who among the following was not a painter at Akbar Court? So we can find the answer to this question by finding painters at Akbar Court. Good idea. Painter at Akbar Court. How accurate the Google is. That's amazing. So, the Savant, leading Indian Mughal artist, created by Abdul Fali Alam, historical empirical. Who were the famous painters and who were the two famous Jashwant and Besawan? These were the two, Desawant and Besawan. So we are confused left with Das Samant and Kalyan Das. I don't know, so let us skip. Which of the following is the major source of gross tax revenue for the government of India? Which one of the following is the major source of gross tax revenue? Major source of gross tax revenue. So corporation tax has the largest contribution to the gross tax revenue of the government of India. Corporation tax. So corporate means the big giant companies. Of course, the tax that they pay is huge. So corporation tax is the right answer to the question. Which of the following is a major source of gross tax revenue? Why does this open up? I don't need it. Okay, we'll jump on to a few more questions and we'll fall asleep as stated thrice and 7:49 only. The time flies quite quickly. Which of the following are the members of BRICS? So BRICS stands for Brazil, Russia, India. C stands for China and S stands for South Africa. So not Bhutan, it's Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So the B is the correct answer. BRICS. Let us find out more about BRICS. Which countries are the member of BRICS? BRICS is the group composed by five major emerging countries: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So question B was the right answer.
The option B. That's what correctly said. After the death of Shivaji, there was a fight for succession between. Okay, let's find out the answer in Google. After Shivaji, the fight of succession was between which two emperor? So after the death of Shivaji, there was a fight of succession between Sambhaji Bhosle and Rajaram Bhosle. Sambhaji Bhosle and Rajaram Bhosle. This one. So they were probably the son of Shivaji Maharaj. Okay, Shivaji is was a famous leader in Maharashtra, Chhatrapati Shivaji. Okay, which one of the following is a non-renewable source? Non-renewable, that means that cannot be regenerated. Solar energy we can get from the sun. Coal, yeah, this is the one. Once exhausted, the coal will not return back to the planet Earth again. It's pretty limited. We must use it in a very efficient and a planned manner so that it remains or it sustains for a longer period of life. Else, our coming generation won't be able to even see or have a sample. How does a coal even look like, or does it even existed? So we must preserve it. Anyway, the coal, of course, in today's time it would be around 80 rupees per kg. That's huge expensive. I remember it's being 8 rupees per kg. Okay, Rio plus 20 is the short name for, let's find out in Google. Rio plus 20. Rio plus 20, short name. United Nations Conference of Sustainable Development. United Nations Conference of Sustainable Development. Let's find it. So United Nations Conference on Sustainable Development. So that's what the Rio plus 20 means for. The Panchsheel Agreement for Peaceful Coexistence was signed between. Panchsheel Agreement. Let's find out the answer. Panchsheel Agreement. So this was, who signed the Panchsheel Agreement? We'll find the answer in there. India and China in unicated the Panchsheel Five Principle of Peaceful Coexistence 1954. Its use was just after the independence, around 7 years after independence of India and China. So I found a new word, unicated. So India and China, Panchsheel. Let's find out a few more questions. Patanjali was a philosopher of Yogacharya school, the author of the book on Ayurveda. Yes, philosopher of. So let's find out Patanjali. Who was Patanjali? Patanjali also was the Gonardiya, Goni ka Putra, at least 2nd century BCE or 5th century CE, author of one of the authors of the two great Hindu classics, the first yoga structure. Okay, so Patanjali was a seer in the ancient Tamil, thought to be the author of the number of Sanskrit and Tamil works. Patanjali, okay. So he was author of the book on Ayurveda, plus for them both commentary and the Sanskrit grammar. Yeah, this is the right answer. Which of the following statement is the context of income in bond relationship periods? I don't know. These all are confused questions, so we are not touching it anymore. Which one of the following is not a member of Mercosur, Southern Common Market? Member of Mercosur. Let's find out. Member of Mercosur. Philippines. Members for Mercosur. I don't know. Little tricky. So let's move on. We are in page number 29 and we have 48 pages to cover. So okay, I'm leaving it till today. It was a beginning and stretching for a few minutes. It's really a good job, not so bad. Having been out of touch from education from so many years, I would say uh, that was really amazing. Spending few minutes on the system and that reading. Initially, it was yawning, but later on, it became really interesting. I have few questions that are still in my mind, and few things would come through practice.
I haven't touched mathematics yet, but will be practicing tomorrow. So good job, I would say, beginning. And I'm stopping it here. I'll upload the entire video on the YouTube for references on the question samples that would be appearing in your examination of SI surgeon that's going to be conducted on 26th of December 2021. So that was just a beginning, and let's hope how are we going forward with such a strategy. What else are we going to do in order to lay emphasis on preparation? That too quite short. It's already 18, so we are left with 2 days and 5 more days, so 7 days a week, and I would um, try to maximize and utilize the time that I have, and at least score more than the passing marks so that I can appear for mains examination and keep my preparation on higher standards. So again, I'll be meeting the next video and with a lot of more information, knowledge on education, and new update about the country, nations, science, physics, chemistry, and whatnot. Basically, the general science. Okay, till then, take care and namaste.